Now come to different kinds of spores. According to their location, they can be of two types. One is known as exospore and second is known as endospore. That means spore can be exospore or endospore. Now what do you mean by exo? What do you mean by endo? Exo mean outside, exo mean outside and endo mean inside. The body, or we can say the part which produce spore is known as a fruiting body, is known as fruiting body. That means the part which produce these spores are known as fruiting body. Now see, this is the body, the fruiting body. If the spores are found outside this body, then they are known as exospore, and found inside, then they are known as exospore. You can simply take the two example. One, take the example of कॉर्न. जो कॉर्न भुट्टा होता है, उसके बाहर क्या होते हैं, सारे उसके वो ग्रेन्स होते हैं कॉर्न के, तो वो तो समझो कि दैट मीन एक्जोस्पोर है. ओके. और एंडोस्पोर कैसा होगा, जैसे पोमग्रेनेट है तो उसको जब हम खोल के देखते हैं तो अंदर से क्या निकलता है, जो वो निकलते हैं पोमग्रेनेट, जो उसके सीड्स निकलते हैं, तो वो एंडोस्पोर है. ओके. और दूसरा क्या है, जो भुट्टा था वो एक्जोस्पोर है. इज क्लियर. अब वो किसी न किसी बॉडी भी तो है ही, तो उस बॉडी को हम अलग से नाम देंगे. नाउ सी, द स्पोर मे बी ऑफ टू टाइप. asexual spores are there as well as we can say sexual spores are also there. So that means spore may be asexual, that means direct will give rise to new body, or they may be sexual. वो सेक्सुअल क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, फिर जाइगोट में मियोसिस होगी और नए स्पोर्स बनाएंगे. नाउ स्पोर्स में भी एसेक्सुअल और सेक्सुअल. आफ्टर दैट दे में बी एक्जोस्पोर और endospore. Now there are three different asexual spore. One is known as zoospore, second is known as sporangiospore, and third is known as conidia. So zoospores are the spores which with the we can say motile. If motile हो, जिसके साथ कुछ फ्लैजिला लगा हो, जो मूव करता हो, these type of spores are known as zoospores. So now these zoospores are endo. कैसे होते हैं, endo. That means they are present inside any body. एंड जिस बॉडी में प्रेजेंट होते हैं दैट इज नोन एज जू स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया मीन टू बियर, स्पोरेंजिया मीन टू बियर. सो जू स्पोरेंजिया इज द बॉडी, दैट फ्रूटिंग बॉडी, और उसके अंदर जो स्पोर है दे आर नोन एज जू स्पोर. और जू स्पोर कौन से होते हैं, जो कैसे होंगे, मोटाइल होंगे. नाउ सेकंड टाइप, तो ये कैसा हो गया, एंडो टाइप का. सेकंड टाइप इज नोन एज स्पोरेंजियोस्पोर्स. दिस इज आल्सो एंडो टाइप, दैट मीन दे आर प्रेजेंट इनसाइड ए बॉडी, एंड दिस बॉडी इज नोन एज sporangiospores. We have seen this in case of a rhizopus, bread mold थे, उसमें ऐसा होता है. तो they are also endospore, और इस बॉडी के अंदर इस the name of this body sporangiospores, sporangiospore, and they are sporangiophore हो गई है. सॉरी फॉर डिस्ट्रक्शन. ये होगा स्पोरेंजियम. जियम मतलब टू बियर, तो स्पोरेंजियम में क्या होगा, स्पोरेंजियो स्पोर्स होंगे. तो ये भी एंडो है, ये भी एंडो है. तो थर्ड टाइप ऑफ नोन एज कोनिडिया. कोनिडिया क्या होते हैं, वो किसी बॉडी के ऊपर ऐसे चेन के अंदर होते हैं. ओके. सो दिस जिस फिलामेंट पे होते हैं दैट इज नोन एज कोनिडियोफोर, एंड दे आर फॉर्म, वी कैन से दे आर प्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ चेन. सो दिस चेन इज ऑफ ए कोनिडिया. तो ये बाहर है, तो दिस इज नोन एज ए एक्जोस्पोर. तो एसेक्सुअल कौन कौन से हो गए, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर एंड कोनिडिया. जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर आर एंडो, एंड कोनिडिया आर ए एक्सो टाइप ऑफ स्पोर. नाउ कम टू सेक्सुअल स्पोर. देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल स्पोर. वन इज एस्कोस्पोर, सेकंड इज नोन एज बेसिडियोस्पोर, एंड थर्ड इज नोन एज ए oospore. So ascospore and oospores are the endo, and this basidiospore is a exospore. Now see, they are the sexual. So the ascospores are the endo, that means they are present in a body, and that body is known as a ascus. The basidiospore, they are present outside the body on a structure, that structure is known as a basidium. Okay. And the oospores are also present in a structure that is known as oosporangium. Okay. जैसे ये स्पोरेंजियम था, तो oosporangium ये भी क्या है, एंडो है. तो दैट मीन दे आर एंडो, एक्सो एंड एंडो.
So these are the 6 different types of spores. So on the basis of this spore and hypha, that means जो क्लासीफाई करते हैं फंजाई को, वो मेनली बेस्ड ऑन देयर स्पोर एंड बेस्ड ऑन देयर हाइफा पे करते हैं, ठीक है, तो दैट वी विल डिस्कस लेटर. सो स्पोर्स जिस बॉडी पे प्रेजेंट है दिस पार्ट में, दैट इज नोन एज फ्रूटिंग बॉडी. देयर मे बी 2 टाइप, एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर. दैट मीन फ्रूटिंग बॉडी के बाहर है तो एक्सो, अंदर है तो एंडो. सो एसेक्सुअल इज जूस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया. जूस्पोर जूस स्पोरेंजियम में होंगे, एंडो है. स्पोरेंजियोस्पोर स्पोरेंजियम में होंगे, एंडो है. कोनिडिया एक कोनिडिया 4 पे होंगे इन चेन, तो ये एक्सो है. देन सेक्सुअल एस्कोस्पोर, एंडो है, एस्कस बॉडी में होते हैं. बेसिडियोस्पोर एक्सो है, बेसिडियम पे होते हैं. एंड ऊस्पोर एंडो है, ऊ स्पोरेंजियम में होते हैं. ओके, सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ किंगडम फंजाई. ओके, आई होप यू गॉट दिस नाउ. Now this is the simple classification of fungi. If it is not clear, I have clicked a ping, I'll send you. So the basis of fungi classification is only morphology of mycelium. That means what type of mycelium is there, septate or aseptate, and mode of spore formation, what type of and how spore are formed, and fruiting body, that means what type of fruiting body is there. Okay, so generally we can divide them into 2 groups. One where sexual reproduction is a non, that means if sexual reproduction non, that means asexual also there. That means sexual reproduction is there as well as asexual reproduction is there. That means both type of reproduction is there. So we have divided them into sexual reproduction non, and other group is sexual reproduction unknown. That means there is only and only asexual reproduction till now. So there are 4 major group of this we can say kingdom fungi. One is known as phycomycetes, second is known as ascomycetes, third is known as basidiomycetes, and fourth is known as deuteromycetes. This mycete word we use for the fungi, mycete, mycota, like this. Okay, so sexual reproduction known है तो we can divide them further 2 group. One is mycelium aseptate. Aseptate means there is no cross wall and multinucleated hypha is there. And second is mycelium septate. तो mycelium aseptate है, उसका एक ग्रुप है that is known as phycomycetes and is also known as lower fungi or algal fungi. What is the meaning of lower fungi and why they are known as, we will discuss in detail. Okay, so if mycelium is aseptate, then phycomycetes. If mycelium is septate, then there are 2 groups. One is known as ascomycetes and second is known as बेसिडियोमाइसीट्स. अगर आपको याद हो, थोड़ी देर पहले हमने किया एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, तो समझ गए ना कि ये किस ग्रुप के हैं, ये किस ग्रुप के हैं. ओके, सो माइसीलियम इज सेप्टेटेड, देन दे मे बी एस्कोमाइसीट्स एंड दे आर नोन एज सेक फंजाई, एंड अदर ग्रुप इज नोन एज बेसिडियोमाइसीटस एंड दे आर नोन एज क्लब फंजाई. हियर जनरली एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड. दैट मीन एसेक्सुअल स्पोर यहाँ पर नहीं है. इसमें एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों है, इसमें एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों है. इसमें एसेक्सुअल स्पोर जनरली नहीं पाए जाते हैं, स्पोर्स ओनली, बाकी वेजिटेटिव और हो सकता है. ओके, एंड द सेकंड ग्रुप इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन. इफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन इन दिस ग्रुप देयर इज माइसीलियम इज सेप्टेड. तो यहाँ इसको हम नहीं रखेंगे क्योंकि वी हैव डिवाइड अकॉर्डिंग टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन और अननोन. तो माइसीलियम इसका क्या होगा, सेप्टेड होगा. एंड द नेम ऑफ ग्रुप इज नोन एज deuteromycetes. Deuteromycetes also known as fungi imperfect. Imperfect इसलिए कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नॉन नहीं है. तो कितने ग्रुप हो गए, फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट, ड्यूटोमाइसीट. फाइकोमाइसीट एसेप्टेड है, एस्कोमाइसीट सेप्टेड है, बेसिडियोमाइसीट सेप्टेड है लेकिन स्पोर्स नहीं है, एंड ड्यूटोरोमाइसीट्स ओनली एंड ओनली asexual reproduction है. Sexual reproduction is not known in this group. Okay, so now we have to, in next lecture we have to discuss one by one in detail as per given in NCERT. Okay, I hope you got this table. I will send pic of this table in group. Okay.